Hello everyone, welcome to Indiawale abroad. Today we have Sarika Dubey in the house. Sarika Dubey is one of the most respected influencer in UK for students and for people who are here on Tier 2 visa or skilled worker visa. She has been influencing over more than 200k people in UK. So let's hear it from her. Hi, thank you for inviting me. No problem. Hello. Thank you guys. Thank you for listening me. I don't know कितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं. हम बहुत देखते हैं. अच्छा, आप लोग अगर देखते हैं, अगर यूजफुल लगता है तो मुझे ऑफ कोर्स कमेंट्स में बताते जाओ और किस टाइप के और फ्यूचर में वीडियोस बनाना है. मेरा चैनल का नाम योर नॉलेज बडी है. सारिका मेरा रियल नेम है, बट आई थॉट योर नॉलेज बडी विल बी अप्रोप्रिएट, इसलिए मैंने वो चैनल का नाम रखा था. एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग मी. No problem, man. So let's start with a very brief introduction. You would like to tell something about yourself, आपकी journey UK में, and like what are you right now, how you started? Yeah, sure. मुझे 13 years हो गया है UK में. I'm working in IT by the way. I started my career in IT. मैं इंडिया में मैंने bachelor's किया है, bachelor's in computer science. And after 2 years of my experience in India, I got opportunity to move through my company. So it was not that I have to find a job here. मैं अपनी company के through आई. I was working in consulting industry. So I was fortunate enough to work with one of the big brands in UK like Virgin Atlantic, Sainsbury's, John Lewis, ASOS. And currently I'm working in one of the largest tour operator in Europe called Dubey, where I'm working as a lead business analyst and lead product owner. So in short, that's about me. A very long CV then in short. Anyway, so let's get started with everybody. Right? So I wanted कि आज का जो हमारा ये वीडियो इंटरव्यू आपके लिए जा रहा है, I want कि इस इंटरव्यू से we let the students जो प्लान कर रहे हैं इंडिया से यूके में आने के लिए या फिर जो ऑलरेडी आ चुके हैं, लाइक सितंबर इनटेक में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, I want to guide them properly, like how they have come to the universities. Like personally on my side, since I've started this journey, I've been getting a lot of messages of students ki please get me a job, get me accommodation, or they're struggling with XYZ issues. Like there are a lot of issues facing either by university side or they're facing by like in terms of job or accommodation and everything. So let's start with that. Okay. The very first step when a student thinks of coming to UK is basically choosing the university, right? This is the very first step. So what would you add upon that? Like how would a student should choose a university? What should he have in mind, he or she have in mind to choose a university? And like what should be a main goal while doing that? तो सबसे पहले द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो फोकस करते हैं यूनिवर्सिटी पे. आपको यूनिवर्सिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको कोर्स पे फोकस करना है. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इंडिया में आई नो, जब मैं भी इंडिया में पढ़ाई कर रही थी, मैं भी चाहती थी मुझे आईआईटी में मिले या नहीं तो आईआईएम से मैं पास आउट हूँ, क्योंकि इंडिया में वो ब्रांड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, उसकी काफ़ी वैल्यू होती है. उस पर ही आपकी सैलरी भी डिसाइड होती है, बिकॉज टॉप फर्म्स एमएनसीज उन लोगों को ही लेती है जो बड़े बड़े कॉलेजेस से पास आउट होते हैं. बट लेट मी रिमाइंड यू, यूके डजंट वर्क लाइक दैट, है ना. ये आपकी सैलरी नहीं डिफाइन होती है आपने ऑक्सफोर्ड से किया है, कैम्ब्रिज से किया है, या आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या कहीं और से किया है. यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है या जॉब्स मिलते हैं वो आपके स्किल सेट पे डिपेंड है. सो बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, दे फोकस ऑन यूनिवर्सिटी. आई डोंट थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया. योर फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, एंड जो आपको पढ़ना है उसके लिए आप रिसर्च करो. यूके मार्केट, यूके में किस टाइप के जॉब्स की डिमांड है, क्या स्किल सेट चाहिए होता है ताकि आपको जॉब्स मिले. एंड फॉर पीपल हु वांट टू सेटल डाउन लाइक योरसेल्फ, यू नो, यू शुड नो कि किस टाइप के जॉब्स आपको यहाँ अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे सेटल होने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से फोकस ऑन द कोर्स. कोर्स की रैंकिंग देखो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में रादर देन यूनिवर्सिटी रैंकिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टडी डेटा एनालिटिक्स, है ना, डेटा एनालिटिक्स सारे यूनिवर्सिटीज़ में पक्का मिलेगा आपको, है ना. डेटा एनालिटिक्स इज इन ह्यूज डिमांड. इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट जॉब अवेलेबल इन द यूके मार्केट, एंड नॉट ओनली इन यूके मार्केट, यूरोप लो, आप वर्ल्ड में लो, दैट इज़ द हॉटेस्ट. आपको पे भी अच्छा मिलेगा और आपकी डिमांड भी अच्छी रहेगी. नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक, एक बार आपने कोर्स सोच लिया कि हाँ मुझे यही डेटा एनालिटिक्स करना है क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू ग्रो इन दैट फील्ड और आपको जॉब भी उसी में करना है. देन स्टार्ट एनालाइजिंग एंड रिसर्चिंग कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है. And then if you are too hung up कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, then you look through the QS ranking देखो, फिर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग देखो, and make like a comparison कि ये टॉप 5 है मेरा यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे फीस है, ये लोकेशन है,
और ये स्कॉलरशिप मिलती है. तो आप ये सारा चीज़ टुगेदर, ब्रिंग ऑल दिस एलिमेंट टुगेदर, देन मेक अ डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी. सो दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट थिंग थिंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी. कोर्स सेलेक्ट करो, फिर जा करके यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को कंपेयर करो, एक अपना टेबल बनाओ, कंपेयर करो, लुक एट द ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप आपको कितनी मिल रही है, कहाँ लोकेशन है, एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज स्टूडेंट एक्सेप्टेंस एज वेल, कि कितने स्टूडेंट्स खुश हैं कुछ यूनिवर्सिटी में जाके. बहुत सारे आप कंप्लेंट्स देखोगे, बहुत जगह यूनिवर्सिटीज़ में लोगों का पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा है, सो पीपल डोंट लाइक दोज प्रोफेसर्स. यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स ऑन द ब्लॉग्स दैट पीपल राइट. कनेक्ट विद पीपल, योर एलुमनाई और एनीवन कि जिन्होंने जहाँ से पढ़ा, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करो, एंड देन टुगेदर आफ्टर डूइंग ऑल योर रिसर्च देन मेक योर डिसीजन. आई नो लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, वो सीधा एजेंट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये पढ़ाई करनी है या मुझे पढ़ने जाना है. दे डोंट टेल कि मुझे क्या पढ़ना है. तो मैं बोलूँगी आपके एजेंट को भी इतना कुछ नहीं पता होगा. सो डो नॉट रिलाई ऑन योर एजेंट, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस. जितना रिसर्च कर सकते हो आप करो, सारा कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन. राइट. यू गाइज आर एट द राइट टाइम. आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको रिसर्च करना आता है, गूगल यूज़ करना आता है, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स देयर. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. बट लाइक रिसर्च आप कर सकते हैं, यू आर लाइक अभी एज टर्म like it's an image, I would say, that UK market is open for specifically two sectors. One is your nursing, like let's say carer visa or like as a nursing visa. There are many of them. And then the second one is somewhere IT, that includes a lot of them. Like there's a very huge list for IT ones, right? So basically these two, but like there are a lot of people who are coming here, let's say personally myself, like MBA or like any of the MSc courses. What would you say about them? Ki what should they be focusing on? Like I understand there is a course, they should be particularly focusing on course and not the university. I understood that, right? But there should be like specifically any guidelines, or like is there, like I heard that you are also doing the same, but like I know you are a single team, like you won't be able to do it a very vast projection. That's why many of them go to agents, and there are many of them. Like I know many of the good agents, like SIUK, IDP, and all those guys. But like in terms of those, like apart from those two sectors, or even if you want to choose those two sectors, they are very specific, so you can. But like what about those people who are not coming or who doesn't share the same background for those sectors? सबसे पहली बात एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में व्हाट आई हैव सीन पीपल, जैसे वो अपने बैचलर्स करते हैं, दे रश टू यूके और एनी अदर कंट्री पढ़ाई करने के लिए. आई डोंट नो इतना क्यों लोगों को जुनून है कि तुरंत बाहर जाना है पढ़ने के लिए. सो द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज दे डोंट गेट एक्सपीरियंस इन इंडिया, है ना. इंडिया के बहुत लोगों को लगता है इंडिया में एक्सपीरियंस रहेगा तो उसका बाहर काउंट नहीं होगा, विच इज़ सच अ मिथ. आपका कुछ भी एक्सपीरियंस हो, इट इज़ काउंटेड इवन दो यू आर वर्किंग इन एन NGO, आप चैरिटी में भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो. इफ़ यू ऐड दैट टू योर CV, इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू. आपकी सिर्फ कितने मार्क्स आए हैं, दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ UK मार्केट. दे ऑल्सो सी हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड एंड गिवन बैक टू द सोसाइटी. इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू. तो आप अगर इंडिया में अगर बैचलर्स भी कर रहे हो, पार्ट टाइम वहाँ पे इतना कल्चर नहीं है इंडिया में, शायद मेरे टाइम में नहीं था व्हेन आई डिड माय बैचलर्स. या तो आई डिड नॉट डू एनीथिंग इन द पार्ट टाइम. मैं यूके जब आई तब मुझे पता चला पार्ट टाइम का यहाँ पे कल्चर है, स्टूडेंट्स करते हैं, इंडिया में नहीं करते. बट इफ इट ऑल यू गाइज वांट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब व्हाइल डूइंग योर बैचलर्स, आप कहीं पे भी ज्वाइन करो, NGOs हो, चैरिटी हो, या आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करो, लाइक इट कैन बी एनीथिंग. यू हैव टू फाइंड इट आउट. एंड सेकेंड थिंग दैट व्हाट यू शुड डू इज, अगर पॉसिबल, after your bachelor's, try to gain at least 2 years of experience from India itself. I'm going to suggest that to everybody, irrespective of whether you are in nursing, whether you are in IT, whether you want to do an MBA, but still you are not figuring out after bachelor's क्या करना है. आपने एक बार जब बैचलर्स कर लिया, 2 साल इंडिया में एक्सपीरियंस लो. इंडिया में जो आप भटकोगे ना, आप जो एक्सपीरियंस लोगे ना, दैट विल टीच यू अ लॉट. और इंडिया में जो काम कर लेता है ना, आप यूके में भी काम कर लोगे. हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू. And I'm not being biased by saying Indians are very hardworking, they are also very smart. आपको बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए. वी आर इन अ फॉरेन वर्ल्ड. यहाँ पे ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज. हम हिंदी हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ में कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल या तेलुगु बोलते हैं वो लोग. तो हमारी ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो वी आर इन अ फॉरेन लैंड. सो ऑफ कोर्स हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे कम हो जाता है द मोमेंट वी स्पीक टू ब्रिटिश. वी डोंट नो देयर कल्चर.
हमें वो टाइम लगता है समझने में, लोगों को समझने में टाइम लगता है। तो लोग जो इंडियंस होते हैं ना, हार्ड वर्क में आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज यू दैट कम्स विथ यू विल डू द हार्ड वर्क। द हार्ड वर्क दैट यू हैव टू डू इन दिस कंट्री इज नोइंग द पीपल, कल्चर और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बोलना। दैट इज व्हाट आई विल से। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, MBA वाले क्या करेंगे या जिन्होंने MSc वाला कोर्स लिया है, तो UK इज़ नॉट ओनली द मार्केट फॉर IT एंड पीपल इन मेडिकल फील्ड। इन UK में बहुत सारे और भी स्किल सेट्स हैं जिनकी डिमांड है, लोगों को नॉलेज नहीं है। लाइक एक्सप्लेन बिफोर, जितना एक्सपीरियंस आपको होगा आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा UK मार्केट, बिकॉज UK इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केट, नॉट डिग्री बेस्ड मार्केट। आई कीप ऑन टेलिंग इन दिस ऑल माई वीडियोस, है ना। जब हम लोग हायर करते हैं लोगों को, व्हेन आई गेट माई CV ऑफ समवन एल्स, या मैं ये नहीं देखती हूँ आपने डिग्री UK में किया है या इंडिया में किया, मैं ये देखती हूँ आपके क्या स्किल सेट्स है, क्या एक्सपीरियंस है फॉर द जॉब यू हैव अप्लाइड। एंड इफ़ योर जॉब इज काइंड ऑफ मैचिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट आई हैव पब्लिश, वो क्लोज मैच होता है, आई इन्वाइट यू, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now, MBA वालों की भी बहुत डिमांड है यहाँ पे। कंसल्टिंग इंडस्ट्री, नॉट टू मेनी पीपल नो दैट देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टिंग इंडस्ट्री इन द UK हु गॉट लाइसेंसेस टू स्पॉन्सर योर वीज़ा। अगर आपके पास 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस इंडिया से है, इफ़ यू हैव वर्कड इन MNC, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, आई नो स्टूडेंट्स को जिनको जॉब मिली है MNC में मिली है। इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट नो एंड दे डोंट टारगेट द राइट कंपनीज। एंड आई हैव मेंशन्ड इन माई वीडियोज लॉट ऑफ टाइम्स, UK में नॉट ऑल द कंपनीज कैन स्पॉन्सर योर वीज़ा। तो आपका टारगेट होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू सेटल डाउन हियर, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपनीज UK में आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। सो इफ़ यू जस्ट गो एंड गूगल UK होम ऑफिस लाइसेंस स्पॉन्सर, यू विल कम टू अ वेबसाइट, वहाँ पे एक एक्सेल शीट मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लो। Couple of weeks back when I looked at it, around 80,000 companies were registered. It means they still can sponsor your visa. Okay? Second point, UK गवर्नमेंट ने 2021 में जैन में स्किल्ड पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम निकाला है, विच इज़ बेस्ड ऑन 70 पॉइंट्स। उसका क्या मतलब होता है, डजेंट मैटर आपका जॉब स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज अ लाइसेंस स्पॉन्सर कंपनी इज रेडी टू गिव यू अ जॉब ऑफर with a salary which is mentioned on the government website, और आपको English language requirements and other bits if you complete, और 70 points आ रहे हैं, anybody can give you sponsorship. Very good example, मेरा neighbor है, student है, and there's just a small नुक्कड़ पे दुकान जैसे होती है, he was working as a part time and this guy was very adamant कि मुझे तो यहाँ पे रहना है, UK में रहना है, and then he was struggling to find lot of sponsorship job. उसने अपने ओनर से बात की, like a typical गुजराती शॉप, you know, ऑफ लाइसेंस, सामान वान बेचना है ना, he just told them कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए ना। उनके पास लाइसेंस नहीं था, उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया and then helped him to apply for skill visa सीधा for 5 years. So the message मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे देने का, आपके जॉब ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू हैपन टू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ लाइसेंस स्पॉन्सर, यू हैव अ गुड चांस टू गेट स्पॉन्सरशिप. Okay, now because I'm talking too much about shortage occupation list, I want to tell you what are the other jobs other than engineering and IT. Of course all the engineerings are there. अगर आप civil engineer हो, mechanical engineer हो, electronics engineer हो, design engineer, production engineer, everyone is in huge demand provided you have some experience from India. अगर आप fresher हो, you will struggle, I'm going to say that. ठीक है, क्योंकि like I said, जब आपकी CV देखी जाती है, आपके experience बहुत important matter करता है. Right. What people don't know, ये new update है, UK का shortage occupation list recently update हुआ है. So there are a lot of construction jobs which are added. Right, It means there are a lot of students who come to me from Punjab, Haryana, UP and all. They always complain to me कि हमारे टाइप का जॉब तो है ही नहीं. And I think this message is for those people जो उस स्टेट से हैं या सिटी से हैं जो आ रहे हैं. अगर आपको कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, you know, that is good enough. There are plenty of jobs under that. Like जैसे कारपेंटर तक का शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में एडेड हो गया है. Roofers, tilers, plasterers and everything is added in the shortage occupation list. There's a demand. बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, आर्किटेक्ट्स हैं यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में. लोगों को ये नहीं पता होता, आर्टिस्ट, डांसर्स, यू नो, फोटोग्राफर्स, यू नो, ग्राफिक डिजाइनर्स, UX, UI, ये सब IT के जॉब नहीं है. दिस इज ऑल आउटसाइड IT. दिस इज ऑल इन डिमांड, है ना. Now coming for people for finance, finance के jobs shortage occupation list में नहीं है, but there are plenty of examples I can give you where people have found a visa sponsorship job, provided
you have at least one of the professional certificates. Either आपने इंडिया से CA किया है या CFA किया हुआ है या आपका सीमा है या CFA level 1-2 है या यूके में एक और यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है AAT. अगर आपने AAT भी कर लिया है आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना बहुत आसान है. एंड आई टच्ड अपॉन योर MBA थिंग. अगर आपको 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस इंडिया से, इफ यू वर्कड इन MNC, जस्ट टारगेट ऑल द कंसल्टिंग इंडस्ट्री इन द UK, यू विल फाइंड अ जॉब इफ यू अप्लाई द राइट स्ट्रैटेजी. तो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रही हूँ, सब टाइप के जॉब्स अवेलेबल है. स्टूडेंट्स को नहीं पता है किस कंपनीज को टारगेट करना है, कब करना है, क्या अप्रोच लगाना है, किस टाइप की CV बनानी है. आई थिंक दैट इज मिसिंग. इफ दे हैव दैट इंफॉर्मेशन दे कैन फाइंड जॉब. And just adding a little bit, I have interviewed like more than 32 people on my channel, YouTube channel, Your Knowledge Buddy, where I have brought people like people from admin as well. NHS ने दिया है sponsorship for someone, a student here, admin के job में भी दिया है. Okay, so there are a lot of people I have interviewed जिनके jobs नहीं है shortage occupation list में. So irrespective of, अगर shortage occupation list में है आपके chances आसान हो जाते हैं क्योंकि of course UK government या market में पता है उस skills की demand है और लोग कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा उनको helpful मिल जाता है. But again, please do not get demotivated if you don't find your jobs there in the shortage occupation list. है ना, काफ़ी jobs हैं. So cut in short, अगर मेरे को जो समझ आया इस बात से, that if you have done your bachelor's in India, try getting 1 or 2 years experience. Take that, beating from the market in India. Exactly. Prepare yourself. Apply for a very specific, like research a lot. Yes. Course के. Yes. Then choose your university. Come in and just go for it. Exactly. All in. Exactly. Right? And कोशिश करें कि अपनी जो आप एक्सेल शीट कैप्शन में डाल देंगे, विल ट्राई टू पुट दैट इन देयर, उन कंपनीज को टारगेट करें. अदरवाइज देयर आर बिजनेसेस हु आर एलिजिबल एंड दे कैन गिव, इफ दे डोंट हैव द सर्टिफिकेट एट द मोमेंट, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन स्पॉन्सर यू, राइट? डेफिनेटली. ग्रेट. एक मे बी आउट ऑफ टॉपिक, इन ऑफ टॉपिक नहीं पता, देयर इज अ क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स आर हियर, they come in, they chose a fantastic course, they chose a very good ranking university, they landed up. Right now, they cannot bring their family on. Otherwise, previously, it was a very big queue. Like they was one was student, husband, kids, and everybody was in there. Correct. And then it was understandable कि आप jobs के लिए struggle हो रहा है market में, right? But at this point of time also, there are students वो आते हैं. Let's say somebody is doing MSc, like one of the example I know on my mind is MSc chemical engineering कर रहा है student, and he is there in market, and instead of going for something like you are allowed to do 20 hours legally, instead of going something very specific to that field, he is going somewhere outside just to manage the finances, pay fees, or maybe pocket money or something. So कुछ इसके लिए कि यार how to manage that. I know universities does help you. काफी वो initiative देते हैं कि यार try करो to get you on field. There are like particular organizations हैं जो आपको इस चीज में मदद करती हैं. उसके अलावा आप उसमें क्या सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स यूके में भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन वॉर. तो आई नो स्टूडेंट्स पे कितना स्ट्रेन पड़ा है, ठीक है, इट्स कॉजिंग देम टू लॉट ऑफ स्ट्रेन. बट अगेन आई एम गोइंग टू से आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, गोल के लिए शॉर्ट टर्म पेन को इतना ज़्यादा फोकस मत देना, ठीक है. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इफ़ यू डोंट डू पार्ट टाइम जॉब्स. सो फोकस ऑन द पार्ट टाइम जॉब, लेकिन इतना उस पर फोकस मत करो आपके अपने लॉन्ग टर्म प्लान या फोकस उस गोल को भूल जाओ, है ना. फॉर द टाइम बिंग टू सर्वाइव आप छोटे मोटे काम कर लो विच इज़ नॉट अलाइन टू योर मेन लाइन, पर बैक ऑफ योर माइंड और वेन एवर यू गेट फ्री टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि आपको उसी में ही लाइन में जाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंजीनियरिंग किया, केमिकल इंजीनियरिंग, राइट, उस एग्जाम्पल में आपको अगर उस लाइन में जाना है, अगर आप जाके किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हो, what you are doing and where you want to grow is not at all aligning to the part time job you are doing. तो आप वो जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो इतना ही उसको टाइम दो, इतना पूरा इंपॉर्टेंस मत दो कि यू आर सो टायर्ड दैट यू कांट कम बैक एंड स्टडी, यू आर सो टायर्ड दैट यू कैन नॉट कम बैक एंड लुक फॉर दिस जॉब जिसमें आपको जॉब चाहिए, सर्च ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यू आर सो टायर्ड. आई हैव सीन स्टूडेंट्स वो 4-5 जॉब एक बार में करने लगते हैं क्योंकि बिकॉज दे नीड मनी, है ना. उतना नहीं करना है, थोड़ा सा करो सो दैट यू कैन सर्वाइव, बट ट्राई टू कीप अ बैलेंस कि व्हेनेवर यू आर बैक होम यू हैव इनफ एनर्जी टू डू योर इनफ रिसर्च इन योर फील्ड.
एंड आई नो देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल ड्यूरिंग देयर, जब वो पढ़ाई करते हैं, गेटिंग जॉब इन देयर लाइन ड्यूरिंग देयर पार्ट टाइम इज़ नॉट ईजी. उसमें बहुत सारे कम ही कंपनीज हैं जो आपको देगी, बट दे आर स्टिल प्लेंटी ऑफ कंपनीज हु वेयर यू विल फाइंड दोज काइंड ऑफ जॉब्स. द थिंग इज दैट आपको बहुत अर्ली स्टार्ट करना है. अगेन वन ब्रिलियंट एग्जाम्पल आई गिव यू. आई इंटरव्यूड वन स्टूडेंट हु इज डूइंग अ डेटा साइंस कोर्स हियर. द मोमेंट शी वॉज सेप्टेम्बर इनटेक स्टूडेंट, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको पता था वो आ रही है, उसके कैश लेटर भी जल्दी इश्यू हो गए थे. बाय जुलाई उसको इंडिया में पता था कि शी इज कमिंग, है ना, सेप्टेम्बर इनटेक में 2 months का था. शी स्टार्टेड एनालाइजिंग द मार्केट. लिंक्डइन पे जाके उसने अपने जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, लोकेशन चेंज कर दिया यूनाइटेड किंगडम. यू आर अलाउड टू डू दैट. द मोमेंट यू डू दैट, इट मीन्स योर प्रोफाइल विल बी शोन इन दी यूके सर्च इंजन. ऊपर से जा करके आप अपना ओपन टू वर्क अपना टैग चेंज कर दो, तब आपकी प्रोफाइल क्या होगा, यहाँ के लोकल रिक्रूटर्स को शो करेंगे. एंड इफ दे रीच आउट टू यू कैन से आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, येस, हाउएवर आई एम कमिंग इन सितंबर, बट आई कैन डू एनी ऑनलाइन इंटरव्यू, यू नो, टीम्स में हो, गूगल मीट पे हो, वैसा करके. तो आई विल से आप अगर ये सारे स्मार्ट मूव करो, यू नो, आने से पहले देखो, व्हेन शी लैंडेड, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू से द मोमेंट शी लैंडेड इन सितंबर उसको जॉब मिल गई, नहीं, but she took 4 months to find the right job in her field. So the day she मतलब started working, उसने 2 month बाकी स्टूडेंट से पीछे काम करना स्टार्ट किया, but when she started in her own line. और वो जो एक्सपीरियंस उसका था, that is adding lot of value in her CV rather than someone who's working in warehouse jobs, है ना. तो ये एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए. इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन द फ्यूचर इनटेक, अगर आप नेक्स्ट तो जनवरी इनटेक ही है, तो आप अभी से एनालाइज करो मार्केट. लिंक्डइन पे जाओ, जॉब इंडीड पे जाओ, है ना, वो सारे वेबसाइट्स जो हैं, ग्लासडोर इज़ अनदर गुड वन. वहाँ काफ़ी जॉब्स अवेलेबल है, वहाँ पे अपना फील्ड का ढूंढना स्टार्ट करो, अपनी प्रोफाइल भी बनाओ, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इट इज़. और वहाँ फिल्टर ऑलरेडी होता है पार्ट टाइम का. यू स्टार्ट अप्लाइंग एंड जस्ट सी वेदर यू आर गेटिंग कॉल्स और नॉट, या आप रिजेक्शन आता है कि नहीं. तो यही मैं बोलूँगी, स्टूडेंट्स को बैलेंस करना आना चाहिए. थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, वो करो, बट लॉन्ग टर्म गोल मत छोड़ो, एंड कीप ऑन अप्लाइंग इन योर लाइन विच विल हेल्प देम टू गेट अ फुल टाइम जॉब, और बाद में शायद स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए. इसलिए सो अभी तक क्लियर आउट हो गई थोड़ी चीज़ें मुझे भी. आई एम लर्निंग अ लॉट, यू नो, आज आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस. सो यू हैव चूज वीज़ा, यू आर हेयर, यू हैव स्टार्टेड टू अप्लाइंग फॉर जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स आपने अप्लाई स्टार्ट कर दिए हैं. व्हाट टिप्स, यू नो, लाइक, and India market and UK market are very different, right? So there are certain like आपने बताया वहाँ इंडिया में you are based on marks and skills. यहाँ पे they mostly focus on your skill sets, right? So what tips would you give to stand out in UK market as a student, as well as international student, and that too just for part time? So irrespective of whichever industry you are, है ना, आप अगर आईटी में काम कर रहे हो या कोई भी इंजीनियरिंग में हो, या जैसे एमबीए वाले भी हैं, तो आपको अपनी फील्ड का एक कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी में हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत लोग आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए. सो द कोर्स दैट यू डू इन योर यूनिवर्सिटी, बट व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब, यू विल सी दैट कंपनीज तब भी आपको हायर नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि यूके में unless until you don't do a Prince 2 certification, you're not seen as a serious project manager. And remember, you're competing with the local British people. They're very good with project management. So how did I come to know? I did my research, I analyzed, I'm and I also came one to in know. the competition now. So whichever is your field, again, I cannot be giving all the examples. आप उसके बारे में research करो. And when you research, go and read at least 20 to 30 job descriptions. आप job description पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा वो preference किसको दे रहे हैं. There's a section which says, you know, we prefer candidates which this skill set. उसमें ये लिखा रहेगा, no, Prince 2 qualified, you know, या कोई और certification होगा. तो वो आप पढ़ो अपने role के लिए and make a note of it, you know, and then find out क्या क्या gaps हैं आपके skills में which they are asking in the job description, and whenever you get time, you know, start preparing for it. I'll give you my personal example. जब मैं UK आई थी, I just had 2 years of experience from India when I moved to the UK, and I was in consulting industry. And I started with retail. तो retail में मेरा knowledge था नहीं, तो मैंने भी यहाँ पे certification किया. मैंने supply chain का certification किया.
एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स आई गॉट चांस टू मूव टू द एयरलाइन इंडस्ट्री. अगेन एयरलाइन इंडस्ट्री में मेरी कोई नॉलेज नहीं थी. एंड अगर जब तक नॉलेज नहीं रहता, यू डोंट गेट कॉन्फिडेंस, राइट? हाउ डू यू गेट दैट कॉन्फिडेंस? देन आई स्टार्टेड डूइंग अनदर सर्टिफिकेशन इन द एयरलाइन इंडस्ट्री. इनफैक्ट मैंने तो डिप्लोमा कर डाला ट्रैवल एंड टूरिज्म में, सो दैट आई हैव ऑल द नॉलेज. तो सेम वे आप जो भी फील्ड में हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, हर फील्ड का कुछ निश होता है, हर का इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होते हैं. जस्ट डू एटलीस्ट वन, एंड इफ यू हैव मोर टाइम यू शुड डू मोर. एंड मैं यूट्यूब वीडियो जब नहीं बनाती थी तब मेरे पास बहुत टाइम हुआ करता था. मेरा टारगेट था, आई एम गोइंग टू टेल वेरी ओपनली, आई एम अ गीक. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और एंड आई वांट टू नो व्हाट आई डोंट नो. ओके, तो मेरा टारगेट रहता था 1 साल में 2 सर्टिफिकेशन करना मिनिमम. So in IT, I have almost all kind of certification, and people who are connected with me on LinkedIn, they can see. अब तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऑफिस के बाद YouTube takes all my time. So that is my piece of advice to your audience. Sure. Okay, got your point कि you should do skill specific. आप जिस भी फील्ड में आना चाहते हैं, you should do certification for that thing, right? For my personal experience, and this is what I've been listening around, अपने जितने भी दोस्त हैं, they are struggling in the market, that यार रेफरेंस से नहीं लग रही, जो लाइक रेफरेंस की वजह से जॉब लग रही है, या फिर मेरे पास वो कनेक्शंस नहीं है. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. रिसेंट सर्वे में ये निकला है कि यूके में 76% लोगों को जॉब रेफरेंस के थ्रू मिलती है, एंड दैट इज अ फैक्ट पब्लिश्ड बाय लिंक्डइन इटसेल्फ. आई थिंक लिंक्डइन के किसी रिपोर्ट में है, एंड आई हैड कवर्ड इन वन ऑफ माय वीडियो, मैंने रेफरेंस भी दिया है. तो एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि आपको जितना रेफरेंस या जुगाड़ लगा सकते हैं उतना आपके लिए ईजी होगा. तो बीइंग न्यू इन द यूके मार्केट, व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी कनेक्टिंग विथ मोर पीपल लाइक योरसेल्फ, people from INSA, people from NISAU, there are so many other groups like that जो यहाँ पे create किए गए हैं या लोगों ने create किया है to help our Indian people, students हैं, where you can have a close bond of people जो एक दूसरे को help and support करे, है ना? हमेशा में भी लोग नहीं कर सकते. For example, I am working in IT, and suddenly if tomorrow you come to me saying, hey, एक student है, उसका experience है, and do you think you have any kind of a opening in your company or anywhere, you may know, हो सकता है मैं उस समय हायर कर रही हूँ, या हो सकता है मेरे कोई फ्रेंड है जो हायर कर रहा होगा. वैसे क्या होता है, नेटवर्क में पता चलता है कुछ जॉब्स है, तो वैसा क्या होगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितने लोगों से कनेक्ट हो सको आप कनेक्ट करो. लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद पीपल, हेल्पिंग आउट. एंड देन वी ऑल ट्राई टू मेक वीडियोस, एंड हम प्रमोट भी करते हैं ये पे डिफरेंट ग्रुप्स में कि वी आर हायरिंग नाउ फॉर दिस कंपनी और माई फ्रेंड इज हायरिंग एंड ऑल. तो मेक श्योर आप वो क्लोज ग्रुप में रहो ताकि यू फील प्रोटेक्टेड, एंड देन यू फील लाइक हाँ कुछ तो सपोर्ट सिस्टम है, यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर नॉट अलोन हियर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू सपोर्ट यू. सबसे पहले वो बोलूँगी. अदर देन दैट व्हाट यू शुड डू, देयर आर लॉट ऑफ अदर नेटवर्किंग इवेंट्स विच हैपन. फॉर एग्जाम्पल मैं IT के एग्जाम्पल दूंगी. IT के बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाउड इंजीनियरिंग इज सो हॉट इन द मार्केट, है ना? क्लाउड के बहुत AWS ने इतने सारे इवेंट्स रखा है इस ईयर. जस्ट गो टू LinkedIn and then there is a preference of the skill sets and all. वहाँ पे इवेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हो, इधर ऑनलाइन या आफ्टर कोविड. तब तो बहुत सारे लंदन में हो रहे हैं या बर्मिंगम में हो रहे हैं, कहीं पे भी हो रहे हैं, आप जाकर के फिजिकली अटेंड कर सकते हो. तो वैसे इवेंट्स में जाने से फ़ायदा होगा. एटलीस्ट 5 जने से तो बात करोगे, 5 लोगों से तो मिलोगे ही. यू विल कम टू नो लॉट ऑफ थिंग थ्रू देम, एंड देन वैसे अपने लोगों में कनेक्शन बनाओ. लिंक्डइन में देयर इज अनदर फीचर विच पीपल डोंट नो. अगर आप अपने स्किल सेट लिखोगे, इट विल शो यू द पीपल ऑफ दो स्किल सेट्स. उनको आप कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हो. Hey, LinkedIn suggested me your profile. My profile is very similar to yours. I'm looking for a job as a cloud analyst, and I saw this opening in your company. And reading the job description, I think so. My profile kind of matches it. Will you be kind enough to refer me in your company? इस type के messages आप try करो. That may work out. Do not target very senior people like directors and all. Target people of your level. उनके पास बहुत टाइम होता है, आपको रिप्लाई करेंगे. और जो जूनियर लोग हैं उनको भी टारगेट करो, आराम से रिप्लाई करेंगे, है ना? आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर 50 मैसेज भेज रहे हो तो आपको 50 रिप्लाई कर देंगे. नहीं, ऐसा नहीं है कि 50 रिप्लाई करेंगे, पर 10 लोग जरूर करेंगे. सो जस्ट गिव अ ट्राई.
लाइक व्हेन आई वाज न्यू इन द मार्केट हियर, मैं भी बहुत स्ट्रगल करी थी, मुझे नहीं पता था हाउ नेटवर्किंग एंड ऑल दिस, यू नो, मैंने भी मैसेजेस करने स्टार्ट किए, यू नो, 50 मैसेजेस करती तो मे बी 5 आते थे मुझे रिप्लाई, बट लाइक देयर इज समथिंग, There is a, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उससे। और मैं क्या करती थी ना, मैं भी इंडियंस को ढूंढती थी, मुझे लगता था भाई भाई हैं, नो, हेल्प करेंगे, यू नो, वैसा होता था। तो आई यूज माई टेक्निक कि हाँ मैं इंडियंस को मैसेज करती तो मुझे शायद रिप्लाई आ जाए। बट यू नो, ब्रिटिश पीपल आर इक्वली गुड, एंड इफ योर प्रोफाइल इज गुड इनफ, यू कैन मैसेज पीपल। और आजकल लिंक्डइन में, पहले तो था भी नहीं इतना, देयर इज, अगर जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं और एचआर के टीम से, उसको टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है, उनके टाइटल में लिखा रहेगा उनके कंपनी में कौन कौन टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स है, कौन कौन हायर कर रहे हैं, आप उनको भी मैसेज कर सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू जस्ट क्लोज दिस टॉपिक विद वन मोर थिंग। लिंक्डइन ने एक और न्यू फीचर निकाला है, इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस इन फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट। राइट। मैंने एक रील भी बनाया था, नाउ आई डोंट रिमेंबर कब बनाया था, पर उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क से इन गूगल में आप काम करना चाहते हो, आप पर देख रहे हो कि आपके रिलेटेड अभी कोई जॉब ओपनिंग नहीं है, तो जस्ट गो टू गूगल्स पेज ऑन लिंक्डइन और वहाँ पे इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस करके आप उसको बस क्लिक कर दो। सो व्हाट विल हैपन, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है विल बी सेव्ड इन गूगल्स डेटाबेस, और व्हेनेवर देयर विल बी ओपनिंग, एचआर विल स्टिल बी लुकिंग एट योर प्रोफाइल, एंड इफ इट मैचेस दे विल कॉन्टैक्ट यू। That's good. That's good. People can do that. हाँ, आप वो सब करो, लाइक आई सेड, जितना नेटवर्क कर सकते हो लोगों से मिलो, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिले इवेंट पे लोग जाने का, मिलने का, जाओ, जरूर जाओ, एंड देन आई एम श्योर यू विल मेक सम कनेक्शन विच विल हेल्प यू। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू से कि सबके लिए होगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर ही मिलेगा लोगों को। सो कोर्स अच्छा सेलेक्ट करो। यू नो, दीज आर लाइक टिप पॉइंट्स फॉर मी नाउ। अगर कोई अब मेरे पास कॉल करके पूछता है कि भाई व्हाट टू डू, आई हैव टिप पॉइंट्स टू टेल देम, बुलेट पॉइंट्स टू टेल देम। कोर्स आपने अच्छा सेलेक्ट कर दिया एंड यू हैव दैट फोकस इन माइंड, ओके यार, कि आई हैव टू गेट सम, like what the job will get me after it, right? What the course will get me after it in the market. And there are many apart from nursing and IT. For sure, ये मैं समझ गया हूँ बिल्कुल अब. And go to networking events, get a good CV, try LinkedIn as much, because personally also, like I have seen कि LinkedIn is a very professional social, and it's just not about the jobs anymore. Correct. It's a lot in it there. Correct. It's a lot. Correct. And try to make connections, because like recently also, like you also there in INSA event, right? And there's further in Nisa ka Farhan ke sath apki chat kai, right? Monday ko. So these kinds of event does really help you, because I have seen your photos and everywhere on INSA that there were students around, and it was a good networking event. And similar और भी होते हैं, and then not just from these big organizations, there are small events going on locally, and like I personally prefer Eventbrite to check those events, right? Correct. And there are many, like you can get from LinkedIn also and other places, right? Okay. So ये चीजें अगर आपके दिमाग में हैं, understandable. But you know, the first thing any talent acquisition team or any HR guy who's hiring, or even if you are seeing somebody, would be like the face of anybody is CV. Correct. In the market, right? Correct. How is it different from like an Indian CV? Because I remember जब मैंने अपना college खत्म किया था ना, I started finding jobs in India, like I used to have those like lengthy CVs for 3-4 pages, and every single line was filled up like I did this, and like, but over here I learned a lot of things. Yeah. And like, do you want to put some light ki how is that different from those things? Yeah, sure. So first of all, अब वो ज़माना गया जो लंबा CV वाला था, you know, like इंडिया में लिखते थे, even when I had written my CV in India, it was 4-5 pages का था, but it is gone now. That is past. You should not be doing that. You should not be repeating the mistakes which we did. Okay? आपको क्या करना है? आपके CV जितना short and concise हो, that is good for you. For example, जो freshers होते हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है लिखने के लिए, तो उनके लिए 1 page CV is okay. And like I was mentioning, आप अगर कहीं पे चैरिटी में या पार्ट टाइम जॉब्स वर्क करते हो, it will add lot of value, वो सब ऐड करो. Now for people with either 1 year experience or 2 years or 15 year, doesn't matter. 2 पेज का ही CV होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. Because recruiters or the hiring managers, they don't have time to go through your lengthy CV, है ना? 6, I don't know, less than a minute they spend on a CV. अगर मैं जब hire करती हूँ किसी को, I just scan it very quickly. My eyes are looking for some keywords, you know. अगर वो मुझे मिल जाता है तो मुझे पता है whether the candidate is good enough or not. Now, सबसे पहले आपका 2 पेजर का CV होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Second thing, आजकल
जब मैं सीवी रिव्यू करती हूँ, बिफोर आई रिव्यू द सीवी दे समवन एल्स हु रिव्यूज द सीवी, एंड दैट इज कॉल्ड ATS, ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम. तो आजकल एज यू नो इट्स ए आई वर्ल्ड है ना, टेक्नोलॉजी एंड ऑल. सो व्हाट वी डू, हम लोग जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, व्हेन एज अ हायरिंग मैनेजर यू राइट द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हम लोग इस AI टूल में दिस जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी फीड रहता है उसमें, है ना, एंड व्हेन योर CV कम्स इन इट कंपेयर्स द कीवर्ड्स इन योर CV वर्सेस the keywords in the job description, and if it matches 80%, then only your profile will be sent to me. तो मुझे filtered profile मिलता है. If there are 100 people applying for the job of business analyst in my company, for example, I will get to see only filtered CV, maybe 20, 30. I don't get to see all and the 100 they are all people. filtered in terms of like those keywords in their CVs. Yes. So what I'm trying to say, making CV is not important. Making ATS friendly CV is important, and that is the world about. And people who don't know ATS CV कैसे बनता है and all, there are a lot of job sites आजकल जो आपको help करेगी, available free of cost है. In my videos I had done a demo of a website called as JobServe, है ना, it allows you to do it 5 times. So आपको क्या करना है, whatever is your CV, take that, upload it, and then the job description जो आपने कोई भी job apply किया company ABCD में, उसका job description upload कर दो इसमें JobServe में. It will start comparing, it will tell you आपका percentage कितना matching है. अगर 80% it means your CV is good enough. Okay, if it's less than that, it means it is not good enough. You may not get called. So that is the alarm for you, which is whenever you apply for the job, do not apply with the same CV. Whatever CV you have, call that as a master CV. And every time you apply for the job, customize your CV based on the job description. है ना, उस job description में क्या keywords हैं, tags हैं, वो निकाल के आपको use करना है. And same thing goes with the cover letter. इंडिया में कवर लेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एटलीस्ट माय टाइम. I remember now it is there. Now it is there, right? So UK में cover letter is very important. They want to see how you have personalized your application. यहाँ personal touch important है ना, काम उतना अच्छा नहीं करो चलेगा, लेकिन आप पर्सनल बॉन्डिंग, नेटवर्किंग, वो सब करो, सॉफ्ट स्किल्स थोड़े काम आते हैं यहाँ पे. तो इन द सेम फैशन आपको कवर लेटर भी, ये नहीं कि एक कवर लेटर विल वर्क फॉर ऑल द जॉब, नहीं, टेक टाइम. 100 जॉब्स मत अप्लाई करो, 4 ही करो, 5 करो, बट डू इट करेक्टली, बिकॉज इफ यू डू इट करेक्टली चांसेस हैं कि आपको कॉल्स आएंगे, अदरवाइज सेम ईमेल आएगा, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सेलेक्टेड. आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन. Of course. So these things are there, and apart from that, like मैंने भी personally भी, like since I've met you and heard a lot about you and knowledge buddy as आप कर रहे हो अब YouTube पे भी and TikTok and Insta पे, do you want to share something about it, like how you have been helping? Because मैंने personally भी काफ़ी दोस्तों ने भी like we commonly knew you or something, or somehow they were been like आपसे उन्होंने मदद ली and you were there kind of. Do you want to share something about it? Yeah. जो when I started my YouTube channel, of course उस समय मैं 1-to-1 consultation नहीं start किया था, because I wanted to see how my videos are being accepted by the audience, है ना. लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया, वी नीड योर टाइम एक्चुअली, है ना, हाउ कैन वी कनेक्ट विथ यू. उस समय मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था, बिकॉज आई वाज जस्ट मेकिंग वीडियोस आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस. when people started commenting a lot and emailing a lot, पहले तो मैं email पे reply जितना कर सकती थी कर, but the volume really went high, and like I said, I'm already in full-time job, making content takes my a lot of time, so I don't have enough time left for myself. तब मैंने, because of all those questions which are coming through, तब मैंने 1-to-1 consultation start किया, where I started giving 15 minutes of my time, like you know, every day, say from 5 to 7 o'clock, where students can just book my time. तो उसमें there are a lot of students who had come to me who were struggling. Either they were in India, you know, job seekers who were looking for job, or students who were planning to come, or students who were struggling here. तो उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी बैठ के उनका रोड मैप बनाया है, you know, whatever you have done before, what you should be doing now, and अगर आपके पास 2 साल का और वीज़ा बचा, आपको क्या करना चाहिए so that you achieve. So out of that, I will say, जिन्होंने follow किया, एक पाथ बनाना मेरा काम है, पर उसको फॉलो करना आपका काम है, राइट. अगर वो इफ दे डोंट फॉलो इट, यू विल नॉट सक्सीड. तो आई हैव ड्रॉन लॉट ऑफ रोड मैप फॉर इंडिविजुअल पीपल बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, एंड आई एम हैप्पी टू से दैट जिन्होंने फॉलो किया, काफ़ी लोगों ने फॉलो भी किया, बिकॉज ओनली सीरियस पीपल कम टू मी, टू बी ऑनेस्ट, है ना. टाइम पास वाले नहीं आते, जो सीरियसली दे वांट टू डू समथिंग दे कम. तो उन्होंने फॉलो किया, उनको सक्सेस भी मिला. ओके, ऑफ कोर्स कुछ लोगों को नहीं भी सक्सेस मिला, बिकॉज मे बी द मार्केट वाज नॉट इन देयर फेवर, या नेटवर्किंग में ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं समझा, या उन्होंने नहीं किया. बट पीपल हु हैड फॉलोड इट, दे हैव गॉट सक्सेस.
what I'm trying to do now here is give you few examples. There's a student, उसको मैंने अपने चैनल पे इंटरव्यू किया है. He came to do MBA, क्योंकि आपने MBA का एग्जाम्पल दिया, I'm going to say. उसको सिर्फ 7 या 8 months का एक्सपीरियंस था वर्किंग इन इंडिया, नॉट टू मच, ठीक है. अमेजन में काम करता था. सो ही वॉज अ स्मार्ट, आई कुड फाइंड इट, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप भी मिला है एंड ऑल, एंड ही वॉज ऑलरेडी अवेयर अ लॉट अबाउट द यूके मार्केट, है ना. सो व्हेन इंटरेक्टेड विथ हिम, सो ही टोल्ड मी द सेम थिंग, मैं तो MBA कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा. बट वॉट ही डिड, ही वॉज स्मार्ट इनफ, ही एटलीस्ट रियलाइज दैट MBA सिर्फ जेनरिक MBA करने से मे बी दैट विल नॉट बी ईजी फॉर हिम. तो ही जस्ट चोज MBA इन फाइनेंस, ठीक है. सो व्हेन यू चूज अ स्पेशलाइजेशन, वो आप ऑलरेडी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, स्पेशलाइज कैटेगरी में जा रहे हो. एंड देन व्हेन ही लैंडेड हियर, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, अगर आप फाइनेंस जैसे जॉब्स आर नॉट इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, बट डिमांड है अगर आपके पास वन ऑफ द प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है. एंड आउट ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट विच आई सेड, he chose one of the certificate out of that, and he started preparing for it other than doing his studies, जो अपना MBA भी कर रहा था, और उसके लिए तैयारी स्टार्ट करने लगी. एंड उसके डिफरेंट लेवल्स थे. द मोमेंट ही पास्ड हिज दैट लेवल 1, उसने अपनी CV में लिखा level 1, एंड द मोमेंट ही डिड दैट, his profile kind of started getting attention, you know, from the recruiters. Why? Because that was a keyword in this market. अगर आपके पास वो keyword है और अगर recruiters ने वो देखा, he started getting call. तो MBA वालों का भी chance है. Again, that is success story. He got visa sponsorship the moment he finished his study. उसको PSW graduate visa में भी नहीं जाना पड़ा, and he straight got sponsorship. And the good thing is, because he's now in my close network, I have connected with other students who are struggling in that field. And he had already referred them in their company as well. उसमें से 3 लोगों को मुझे पता, और लोगों को स्पॉन्सरशिप मिली है जॉब. Networking, ठीक है, दिस इज नेटवर्किंग. बिकॉज पीपल रीच आउट टू मी, तो मैंने देखा उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है एंड दे वर स्ट्रगलिंग जस्ट टू नॉट नोइंग कहाँ अप्लाई करें, तो उनको मिला. ठीक है. सेकंड स्टूडेंट जो मैंने अपने चैनल पे इंटरव्यू किया था, लाइक आई मेंशन, यू नो, शी वाज वर्किंग इन NHS पार्ट टाइम में. शी वाज स्मार्ट इनफ कि उसको पता है NHS इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटर हियर. आपको भी ये पता होना चाहिए इफ यू गाइज आर वाचिंग माय वीडियो. तो उसने पार्ट टाइम में भी उसने एडमिन का जॉब मिला, उसने ले लिया, एंड वो एडमिन ही कंटिन्यू करते रही. एंड व्हेन शी स्पोक टू हर मैनेजर की स्पॉन्सरशिप का, एंड मैनेजर वाज सो हैप्पी, इज लाइक हाँ ठीक है, वी कैन गिव यू स्पॉन्सरशिप एंड ऑल करके. इन टर्म्स लाइक दिस इज मैंने फील किया है ये इन टर्म्स एज लाइक हायरिंग, बिकॉज लाइक आई डू हायरिंग नाउ एंड ऑल दो स्टफ, कि if somebody you think he's capable, like बंदे में बात है, he can work a lot hard, and personal experience है, Indians do work a lot. Like सीधी बात, end of the topic. Agree. We work hard, right? So even employees are in term like kind of happy कि यार चलो 5 साल के लिए I have a very good employee with me. At least for 5 years तो ये हमारे साथ हैं. True. तो it's like a good thing in terms of employment apart from that. And like जैसे आपने अभी बताया कि generic MBA से and the story you shared, right? Personally, I did my MBA. I came here in 2018 September batch. I was thinking to do an MBA general one, but then I chose with project management. See, at least specialization. So I did specialization there. And like as soon as I had one with placement year also. Okay. So I did 1 year of placement with Amazon. Oh, good. And then after that I started कि चलो, but COVID came in and all this, so I had to go for PSW for 2 years. But those 2 years also I was trying to be, you know, at least I'm somewhere in management touch and everything. Okay. But as soon as I've done, I did applied for jobs and I got it, and now I'm sitting here with sponsorship. मेरा next वही था, story number 3 इनका ही story था which he started saying. So you tell me about it, you know, how did you end up with sponsorship job, you know, क्योंकि आपने MBA in project management किया है, right? आपने कैसे job ढूंढा, किस type का ढूंढा, how did you get that? I would say 90% of this was networking. I had common peoples around, and like as you right now, therefore I had people to motivate me and to guide me through the path. I have the very, very nice people in my life at least. So mostly networking, and then I would say a little bit hard work, little bit luck combined, and voila. And surround yourself with smart people. अगर smart लोगों के साथ रहोगे, you will learn so much from them. I'm trying with one now. Oh no, not me. So in short, what we are trying to say is, बहुत सारे स्टोरीज हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं. जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, प्लीज़ डिस्करेज मत होना कि यहाँ जॉब नहीं है. जॉब्स हैं, स्मार्ट लोगों के साथ रहो, यू नो, मेहनत करो, नेटवर्क करो, यू विल गेट टू नो अ लॉट, है ना. डू नॉट वरी टू मच. Okay, so further on, like from a personal experience and from experiences I've been hearing a lot around, and especially after the COVID thing, students आते हैं and you know it's like a totally flip.
In India, you have everyone around, same language is there, and there are many things like you are no यार आप zero से आप पैदा से आप 20-21 साल तक आप उस वहाँ रहे हो, you are used with every single thing there, you're used to it, and especially with just like एक flight just changes everything around, right? True. A lot of pressure is there. The first pressure is you're settling in something new. Everything's New just environment. sparkles, right? And so you have to do studies, you have to take care of your job, you have to make sure that you're doing the right job to make a good future. And there the list is just like homesickness, for me, miss Indian food. Yeah, true. Those kind of stuff, like आपने भी ऐसे ही start up, you came here, you were there, right now also you're doing a 9 to 5 job, you have a family, you're doing, like you have a YouTube family apart from that, you're doing a content creation journey for, इस बारे में like how to balance this thing, like a mental health, and then how to balance your work life and everything for every student, and even for you, what have you been doing, and what would you say for the students or like people who are there? एक ही आंसर है मेरे पास इसके लिए, irrespective of whether you're a student or a working professional or a content creator, doesn't really matter. Discipline is a thing. अपना रूटीन बना लो, जो भी आप काम कर रहे हो, whether आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या 9 to 5 जॉब कर रहे हो, doesn't really matter. सबके पास 24 hours है एक दिन में. True. How you utilize it, what do you do with it, it's totally up to you. तो मेरा एग्जाम्पल मैं अपना पर्सनल लाइफ का दूंगी, तो मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है. फॉर एग्जाम्पल मैं संडे को सारा अपना शूटिंग करती हूँ. संडे इज माई शूटिंग डे, आई डोंट डू एनीथिंग अदर देन शूटिंग. Like I start with thinking, what should I make, and then I research about it. और हो सकता है रात के 12 भी बज जाते हैं, मैं शूट करती हूँ. बहुत बार ऐसा हो जाता है जब सब सोने चले जाते हैं, मैं इस रूम में आती हूँ 12 बजे भूत की तरह तैयार होके मेकअप लगा के बैठती हूँ, एंड देन आई डू 3 वीडियोस. जैसे मैं यूट्यूब पे 3 वीडियो डालती हूँ एक वीक में, आई कम एंड डू, एंड देन इंस्टाग्राम रील जैसे 5 वीडियोस में तैयार कर लेती हूँ, सो दैट थ्रू आउट द वीक मेरा रेडी रहेगा. हाँ, and then I give it to my editor and he kind of edits it, मैं publish करती हूँ. So I just do it, I have my schedule कि Sunday is my shooting day, Saturday is my chill out day, so nothing work, like okay. no work, no shooting, nothing, family out, friends से मिलना, कहीं event जाना है, कुछ भी करना, it's a family day. Friday also I don't shoot, it's my chill day. तो मैं, और if you look at Monday to Thursday or Monday to all these days, I don't do too much, I just keep an eye on what's going on. जैसे I cover a lot of UK immigration news, है ना, क्या news आ गया, अगर अचानक से आ गया, then I do try to make video during the week. Otherwise I don't try to disturb my weekday. I keep it normal. Like you mentioned about mental health, starting में जब when I started my channel, ऑफ कोर्स उस समय मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगता था क्योंकि आई डिडंट नो हाउ टू मेक वीडियोस, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता था, बहुत टाइम लग जाता था, ऐसा नहीं है एक दिन बैठा कर लिया. तो इट वाज इम्पैक्टिंग माय मेंटल हेल्थ एज वेल. देन आई थॉट आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन, content creation is just a small part of my life, it's not completely that is hijacking my mental peace. I had to draw that line. तो मैं धीरे धीरे अपना खुद रूटीन चेंज किया, डिसिप्लिन लाई मैं, and then I just keep like Sundays to do all that. तो same way I will say students को भी, whatever you're doing, अगर आपको पढ़ाई करना है, जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हो, how many hours you study, you have to be there. फिर घर आके आपको अपने assignments, dissertation या जिस पे भी काम करना, how many hours you have to allocate. And then if you're doing your part time, you are allowed to do only 20 hours per week during not holiday time. तो आपको पता है कितने hours available है, नहीं है, तो वैसे ही आप maintain करो, balance करो. And then make sure you take care of your mental health, which is very important. And coming to a new country, like you were saying, it's already a big challenge for you guys, है ना? New country, new food, new people, everything. Stay connected in your group, and again, make more friends as well. ऐसा नहीं कि सिर्फ Indian से connect करो, ऐसा I'm not trying to say. The more you mingle, you will learn a lot of things, है ना? उनसे भी सीखोगे 4 चीज़, maybe new food सीखोगे, new चीज़ सीखोगे. Maybe they have a different kind of festivals or things, you will learn. So grow your network outside your Indian community as well, and then just be disciplined in whatever you're doing. And most important, ask for help. बहुत सारे लोग जो depression में चले जाते हैं. I've heard a lot of news about people taking extreme steps as well. Do not do that. People like them and they're people like Nisayu, Insa, ये सारे लोग community है जहाँ पे available है आपके लिए free of cost to help you guys. They had already helped a lot of people in the crisis. जब last year या COVID के time में accommodation का issue था और भी बहुत सारे issues थे. These guys had helped a lot.
तो रीच आउट टू पीपल, है ना, कोई शर्म की बात नहीं है यहाँ पे, है ना, एवरीबडी टेक्स आउट help from each other. There was a time when I needed help, I seeked help, you know, there can be a time when you will need help. तो शर्म करने की बात नहीं है, just come out and tell you need help. Everybody need help at some point of their life. It is true. And just stay connected. Yeah. So we have covered almost like how a person should do, like anybody should do what they should do by CV बनाते हो आप, you should select a good course and you should be here. Like उसके बाद आप क्या steps करो, how can you find a good part-time job relevant to your field. Okay. Networking is a big part. Building a good CV is one of the biggest part there. And then you can get to know कि आप अपने mental health के पे focus करें, get to know in a good circle and everything. Sure. सारी चीज़ें अच्छी हैं. आप अपने बारे में बताइए, how did you started this whole thing and how did a Sarika Dubey from Lucknow is now your knowledge buddy and have such a huge family all over India, and I presume there is many of them like me in UK who are like adoring. मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम ही बात करती हूँ, तो शायद मुझे थोड़ा टाइम लगे ये एक्सप्लेन करने में. तो जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. तो आई एम मैरिड, एक हस्बैंड है मेरा. एक ही है ना, एक ही हस्बैंड है मेरा, है ना. वी आर मैरिड फॉर 8 years now. So when I moved in this country like 2010 में, तो of course उस समय शादी नहीं थी. मेरा और आदि का long distance relationship था. We met in India by the way. And then 2015 में शादी हुई दिसंबर में, and he also came on my dependent visa 2016 में. उसके बाद we are together here. My husband is also in IT. कुछ लोगों ने मेरे रील्स में मेरे हस्बैंड को देखा है. दोनों IT जॉब में. हाँ, तो he's also in IT. And that is one of the reason how we bought this house. So currently, for people who follow my channel, उनको पता होगा कि last year दिसंबर में हमने ये 6-bedroom house लिया है. ये हमारा सेकंड हाउस है यूके में. एंड जो आज हम वीडियो में बात कर रहे थे, आईटी जॉब्स की डिमांड है. डिमांड नहीं, बहुत डिमांड है ना. दैट इज द वर्ड आई शुड से. और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है, एंड इफ यू वर्क विद गुड ब्रांड्स, यू नो, you can earn money like this. And the good thing is, अगर आपको sponsorship नहीं चाहिए, for example, my husband was on dependent visa, उसको sponsorship नहीं चाहिए था, तो he was working as a contractor. And for I heard this, right? Yeah. That outside IR35 Exactly. and all, you really get very good money. Exactly. So ये पॉइंट हमने कहीं और नहीं कवर किया, मैं भूल गई थी शायद. तो यूके मार्केट में कॉन्ट्रैक्टिंग का ना ह्यूज डिमांड है, और दिस अ गुड मार्केट, यू नो, कॉन्ट्रैक्टिंग का. सारी फील्ड में है. आईटी में, लाइक, यू नो, माय हस्बैंड वाज देयर, तो उसने कॉन्ट्रैक्टिंग किया आईटी में और अच्छे पैसे कमाए. But personally, I have somebody who's earning like 1,000, I guess 700 or 800 per day. You can. He's earning that per day. Yeah, I'm not saying what my husband is earning, but I'm saying you can earn अगर आपके पास राइट स्किल सेट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपके वो पर्टिकुलर स्किल सेट डिमांड में है. इजली आई हैव पीपल जो £1,000 भी एक दिन में कमा सकते हैं. एंड ऑल्सो फॉर पीपल जो MBA भी करते हैं, अगर आप कंसल्टिंग इंडस्ट्री में हैं और आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, क्लाइंट्स आर रेडी टू गिव योर कंपनी एक्चुअली £1,000 पर डे का रेट भी. दैट इज अ थिंग. हाँ, तो हम लोगों ने हम दोनों IT वाले हैं, है ना. IT फैमिली है हमारी, और हमारे IT फैमिली में एक छोटा सा हमारा फ्रेंच बुलडॉग भी है. He is also an IT dog. हाँ, वो शी है बाय द वे. Sorry. उसका नाम मिली है. तो शी इज पार्ट ऑफ आवर IT फैमिली एट द मोमेंट. अभी मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं इंडिया से, एंड ही विल बी हियर फॉर सम टाइम. हमने उनका 5 साल का वीज़ा करा रखा है, जब मर्जी आए जाए करके वैसे, एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर देम. तो लास्ट ईयर हम इस घर में मूव हुए थे, एंड देन पुराना वाला घर हमने अभी रेंट पे लगा रखा है ना. तो अभी फ़िलहाल वी हैव 2 हाउस. और मेरे बारे में आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है. व्हेन एवर आई गेट टाइम आई गो फॉर रनिंग. आई एम वेरी स्पोर्टी बाय द वे. मैं स्कूल में जब थी, मुझे PT उषा बनना था. पता नहीं मैं IT में कैसे आ गई. आई स्टिल डोंट नो अबाउट इट. नो प्रॉब्लम. इसमें PT आप अच्छा रन कर रहे हो. यू आर गोइंग फॉर अ वेरी गुड मैराथन इन दिस. So I am a sporty. I like all those sport activities. So अगर weather favorable होता है ना, most of the people will see me running in the park. I met few subscribers as well जो मुझे पार्क में मिले. I told you, very big family of yours.
तो दैट्स ऑल अबाउट मी. मंडे टू फ्राइडे बोरिंग जॉब है, जॉब करो, उसके बाद यहाँ पे तो खुद से कुकिंग करो. मेड होते ही नहीं है, कुक नहीं होते हैं. यू कुक, यू क्लीन, Biggest struggle in as a boy life, very big struggle. आई नो. तो हम लोग का सब सेम स्ट्रगल है यहाँ पे. बट यू नो व्हाट, इट्स ओके. इट मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट. यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. आपको पता है कि इतने ही टाइम में 24 आवर्स में आपको ऑफिस का काम करना है, कंटेंट बनाना है या खाना बनाना है. नो, समटाइम्स खाना बनाना इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कंटेंट बनाना है ना. मैं जो खाना बनाती हूँ मेरा इतना अच्छा नहीं होता. माय हस्बैंड इज नॉट अ फैन ऑफ माय फूड. ओके, खा रहा है बस वो Can't complain. Married. या चॉइस नहीं होती है ना ज़्यादा. And that's all. like, do you want to tell something more about Knowledge Buddy? Like, I know that you do one-to-one. Yes. And then I have seen you on, like, you were recently featured on New York Times Square. Yes, service. Yes, thank you. Right? And like something more about how you are working on that. And I heard that you have a company registered now on your name. Yes. Right? Yes, So that's true. do you want to put something on that? Yeah, काफी कुछ पता है ना. So first of all, I'm going to just give you a brief story of why I started my Your Knowledge Buddy, है ना. Because you know, COVID के time में I work in travel industry, है ना. ट्रैवल इंडस्ट्री में आपको पता है कोविड में nobody was flying, nobody was booking holiday. एंड जब हॉलीडे ही बुक नहीं हो रहा है, कस्टमर्स पे ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी को पैसे कहाँ से मिलेंगे. जब कंपनी नहीं चल रही थी तो आई वॉज फरलोड. एंड व्हाट इज फरलोड मीन, मे बी इंडियन ऑडियंस को ये टर्म नहीं पता. इट्स अ टेम्पररी काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो कंपनीज यहाँ पे है यूके में उनके गवर्नमेंट के साथ है कि आप अपने स्टाफ्स को निकालोगे नहीं. यू डोंट फायर देम इन सच डिफिकल्ट टाइम. आप उनको फरलो स्टेट में रखो. इट मीन्स कंपनी विल गिव यू हाफ मनी और फुल मनी, 80% एंड 20% योर कंपनी डज. ऐसा था. So उस समय I was furloughed and during that time it was I think 2020 अप्रैल की बात ही है. तो मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने इतने सारे टाइम का क्या करूं. 1 month I had a party. When I say party means you were not allowed to meet each other. Netflix मतलब देखना, Amazon Prime, रात तक 4-5 बजे तक देखना, 12 बजे उठना. I followed that and I thoroughly enjoyed it. 1 month. पर उसके बाद मुझे लगने लगा यार I am wasting my time. Like I said, I am a geek. मुझे लगता पढ़ना चाहिए. That is when I started studying for another certification. Like I said, cloud is the hottest in the market. तो मैंने भी cloud engineering का certification किया, AWS का. And within 1 or 2 months of studying, I believe I passed the exam. उस समय like my husband was like, why don't you make a video about it, and I said, ये कौन देखेगा, exam दिया है तो exam ही तो दिया है. That is how the conversation went, and then that is how I started my YouTube channel, and rest is history. I can see the button there. yeah. Right. And then it started growing, as you all know. जैसे मैंने बोला 1-to-1 मैं नहीं देती थी. People started requesting. Now there are a lot of students who are coming. They need help in, like you were saying, choosing a course, university. And not only that, not only UK, Canada जाए, New Zealand जाए, Australia You're covering all of those, yeah. Now I've started covering all that. Indiawale abroad is also. Yeah, you see? So I'm also focusing कि अभी तो right now I'm physically present in UK, right? But I am planning my best and I'm trying my best कि I cover Germany, I cover European Union, I cover Canada. At the moment it's tricky, but I will try my best there also, and specifically Australia, because I have a lot of people texting me that like Australia का आप cover up करें. तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. I got comments, I was getting comments, emails, messages and all. Then I knew okay, they need that kind of information. तब मैंने अपने research start किया एक और भी countries का deep में जा करके, whether it was about study, university, courses, job market, immigration, everything, I started researching about it and pulling out videos. एक तो वो मार्केट थी. उसके बाद when people were more interested कि आप हमारा अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में ना, आप कर दो, we give you the fees and all that. तो 2 टाइप्स आ रहे थे. बहुत लोग चाहते हैं कि मैं उनका वीज़ा अप्लाई कर दूँ. आई एम नॉट अ इमिग्रेशन एडवाइजर. आई पुट अ डिस्क्लेमर इन माई वीडियो. आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज़ बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो वैसे आ रहे थे, वीज़ा रिलेटेड आ रहे थे, तो विच तो आई स्टिल काइंड ऑफ से नहीं बाबा, आई एम नॉट दैट इन दैट फील्ड. Now when students के बहुत आने लगे, then I thought it's now time, maybe because of the knowledge I have gained here and all, it's better to put that in a particular kind of formal forum. तब मैंने ये Your Knowledge Buddy Academy type का start किया है, where I have also partnered with someone like my operational team in India who take cares of all the leads which I'm getting. They are trying to make sure they are guided properly, and I do have weekly calls with all the students as well, जहाँ मैं उनको खुद mentor भी इसके बाद अभी आपको और आने वाली. I will try my best. I will put the caption below आपका form, because I myself I recommended to one of my cousin. He is interested, so I recommended like
Yeah, sure. Get there. Thank you. And again, it's a free service. People come. The only advantage is like मैं उनके साथ calls करती हूँ, उनके बारे में और थोड़ा details जानती हूँ. I try to understand what are they interested in. And sometimes I don't want people to take a course just because in demand. है ना, बहुत सारे लोग हैं, for example, data analytics का course लेके आ जाते हैं, but they don't pass. Okay, so I don't want people to force themselves to take something which they are not meant to be doing. है ना, तो मैं उनसे जब बात करती हूँ ना, I try to find out their strengths and weakness, and based on their strengths I try to map the kind of courses they should do, and then map the universities. There are plenty of university which gives those courses, but selecting a course is more important. So I guess हमने mostly cover किया है कि as a journey, if you're planning to be like as a student आप UK आ रहे हैं, और let's say आप tier 2 पे आप job search करना चाह रहे हैं, you should focus on different skill sets, relevant networking करें, CV पे focus करें, and then once you are here, try to network with the right people, get to know the market better, get the right skill set certification where possible. These are like major portions how to survive in UK. And then mental health you have covered very nicely up there. And I'm very sure as knowledge buddy you'll grow more and more. I've seen you myself growing almost 30-40k in months, right? So that is a very big number, and I've personally been feeling it कि आप बहुत help out कर रहे हैं चीज़ों को, तो Thank you for that. Thank you very much. Right? And apart from that, do you want to end up with like something, you know, a very latest immigration जो students को ध्यान रखना चाहिए, or like tier 2 sponsors को ध्यान रखना चाहिए when they are coming to UK, or something that has been recently passed out which is in favor, or maybe not favor, like something very recent immigration updates in terms of UK? हाँ, ये नहीं पता फेवर में है या नहीं है, वो लोगों पे डिपेंड है how you take that news. So first news ये है कि 4th of October से वीज़ा फीस इंक्रीज हो गई है, Right. irrespective of whether it is a student visa, skilled visa, tourist visa, you name the visa category, all the visa categories are impacted. Even for people who will be applying for ILR or British passport, everything, you know, सबकी फीस हाई हो गई है. हेल्थ सरचार्ज का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कितना और कब, पर इट इज़ ऑल्सो कमिंग एंड दैट विल बी अ बिग चंक, यू नो, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रूमर्स है कि मे बी फेब में, मार्च में या नेक्स्ट ईयर समवेयर दे विल डू इट, बिकॉज उनको बैक एंड में बहुत चेंजेस करने पड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे टेकिंग टाइम. सो जस्ट बी अवेयर कि और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा. सो दैट वाज द बिग अनाउंसमेंट. सेकेंड अनाउंसमेंट जो हुआ है, लाइक यू ऑल्सो कवर्ड, यू नो, मास्टर्स स्टूडेंट जो हैं अब अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला पाएंगे जनवरी इनटेक से. हाउएवर देयर इज अ लिटिल हाउएवर देयर. If you're doing a research based courses like PhD, you are still allowed to bring your dependent. ये UK में, okay? तो again, I don't know how many people are interested in PhD like you. उसे भी अभी भी PhD करना है. हाँ, अगर there are people like him, I'm trying to. I'll try my best. Yeah, if you're keen to do PhD, you know, and if you already have a family in India, you can bring your family. That is again up to you. आप उसको positive देखो, negative देखो. If I look at the positive side, अगर कम लोग आएंगे UK में, तो जो students already हैं या रहेंगे उनके लिए competition कम better रहेगा, क्योंकि competition कम होगा, job opportunities आपके लिए मिलेंगी ज़्यादा. अगर नेगेटिव देखो तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली है, जो मास्टर्स वाले आ रहे हैं, वो अपने वाइफ या बच्चे या हस्बैंड को नहीं ले पाएंगे, यू नो. सो दे आर बोथ साइड्स ऑफ थिंग, है ना. सो दैट वाज द सेकंड अपडेट. द थर्ड इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूके में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आते ही उनका फर्स्ट डे से टारगेट रहता है, भाई स्किल्ड वीज़ा कैसे मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, हमें कॉलेज नहीं जाना पड़े, यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़े, फीस नहीं पे करनी पड़े, ठीक है. तो बहुत स्टूडेंट्स ने किया, एंड दैट नंबर हैज गॉन अप. एंड आई टेल यू, आई गिव अ लिटिल बैकग्राउंड. व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर अ स्टूडेंट एनरोल्स हियर, है ना, फॉर एग्जांपल आपकी फीस 15,000 पाउंड है, आपने समझ लो 5,000 पाउंड या 3,000 पाउंड आपने ऑलरेडी पे किया था बिफोर कमिंग, यू नो, फर्स्ट सेमेस्टर का आपने इंस्टॉलमेंट दे दिया था. जब आप आते हो, एनरोल करते हो, तो यूके गवर्नमेंट क्या होती है ना, 15,000 को ऑलरेडी उसने फोरकास्ट कर लिया है कि यू विल बी पेइंग दिस मनी, है ना, वो अपने फोरकास्ट में वो करके रखती है. बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पे, आते ही, यू नो, दे टेक अप द स्किल्ड वीज़ा, यू नो, थ्रू sponsorship, or there are a lot of people getting into the carer visa because they find it very easier where people are, or the companies or care homes are ready to sponsor visa. तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं और ना फीस आगे पे करते हैं. exactly. तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था. देयर इज अ स्पेसिफिक परसेंटेज एज वेल विच इज़ पब्लिश ऑन द यूके होम ऑफिस. तब उन्होंने ये डिसीजन लिया है अब से, दिस वाज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त सितंबर टाइम, कि अब से आप
अपने पढ़ाई को जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आप कोई भी दूसरे वीज़ा कैटेगरी में चेंज नहीं कर सकते हो. सो व्हाट इट मीन्स, फॉर एग्जांपल आपके कैस्ट लेटर में लिखा हुआ है कि 30th सितंबर इज द एंड डेट इन योर कैस्ट लेटर, देन एनी स्पॉन्सरशिप जॉब और न्यू जॉब दैट यू आर टेकिंग आउटसाइड स्टूडेंट वीज़ा आपको 1st of October से ही मिल सकता है. उससे पहले आप नहीं ले सकते हो. जो कंपनीज आपको स्पॉन्सर करेगी आपको वो स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकती. द कंपनीज हु आर लाइसेंस स्पॉन्सर्स दे शुड नॉट इश्यू यू अ जॉब ऑफर बिफोर योर कास्ट एंड डेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर इसमें गुड पॉइंट और बैड पॉइंट ये बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने ये मैसेज को ठीक से नहीं समझा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इंटरप्रेटेड दिस न्यूज़ एज अगर आपने पढ़ाई की है लेकिन आपने फेल कर गए हो तब भी आप स्विच नहीं कर सकते स्किल्ड वीज़ा पे आफ्टर योर कैस्ट डेट एंड्स. यू नो, लोगों को लगता है आप नहीं कर सकते हो बट यू कैन. व्हाट आई मीन इज, फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग एमबीए, आपने फेल किया, आपने पास नहीं किया एग्जाम, है ना, आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया, कैस्ट लेटर में आपका एंड डेट 30th of September है. Even though you have failed, but you say you have managed to find a sponsorship job, you know, whether in consulting industry, any industry, a care home, you are still allowed to switch to a skilled visa, provided you have found a company who's ready to sponsor your visa. This is very important. So when we say that you have failed it, so does that mean कि जैसे like block system यहाँ पे होता है usually हर एक university में. So let's say I have failed the last block, due to which my result will be also delayed. So is that delayed process you're talking about कि यार आप switch ही कर लो सीधा? हाँ, नहीं, फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है आपके अगर कैस्ट लेटर में लाइक आई सेड, यू नो, गवर्नमेंट, अगर आप यूके होम ऑफिस के वेबसाइट में जाओगे दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द कैस्ट लेटर का रेफरेंस दिया है. आपका जो एंड डेट जो भी लिखा हुआ है, आई डोंट नो अगर आपको न्यू कैस्ट लेटर मिलता है, यू नो, इन दैट केस, तो जो भी आपका एंड डेट है आपको जॉब ऑफर जो मिलेगा उसके एंड डेट के बाद होना चाहिए, नॉट ऑन द सेम डेट एज वेल. अगर 30 सितंबर तो नहीं होगा. यू नो, फॉर एग्जांपल जो मैं बोली थी एमबीए वाले, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने पास नहीं किया एग्जाम, आपने फेल किया है, बट आपने एग्जाम दिया है, आपने पेमेंट फीस पे की है, इट मीन्स यूके गवर्नमेंट ने 15,000 जो बोला था आपके लिए रखा था कि आपने आके पे किया. यूके गवर्नमेंट ने सिर्फ ये मेंशन किया है एज लॉन्ग एज यू हैव बीन गोइंग टू यूनिवर्सिटी, आप जाकर के सारे कोर्स फीस पेमेंट किया है और कैस्ट लेटर के एंड डेट के बाद अगर आपको जॉब ऑफर मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू पास और फेल, यू आर एलिजिबल टू स्विच टू स्किल्ड वीजा. ठीक है. आई होप ये मैसेज सबको समझ में आए. अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोग फेल कर गए हैं, क्या वो स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट और अपडेट आया था लाइक आई सेड इन वन ऑफ द पार्ट की यूके में जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, यूके गवर्नमेंट इसको कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. तो लेटेस्ट अपडेट यही था, उन्होंने कुछ जॉब्स को ऐड कर दिए. लाइक आई सेड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स वाज नॉट इन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, अब उसको ऐड कर दिया गया. सो इफ यू गाइज आर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यू नो, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू गाइज बिकॉज यू विल सी देयर आर मोर कंपनीज नाउ विलिंग टू स्पॉन्सर योर वीजा एंड देन यू कैन गेट योर स्किल्ड वीजा एंड यू कैन सेटल इन 5 years. Okay, the last update is not an update, it's just an ongoing discussion at the moment which you should be aware of कि यहाँ पे जैसे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक कर सकते हैं. अभी डिस्कशन हो रहा है कि क्या वो और भी लॉन्ग कर सकते हैं, लॉन्ग आवर्स लाइक 40 आवर्स की भी बात हो रही है. ठीक है. अभी भी डिबेट हो रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. यूके मार्केट में भी लेबर की डिमांड है, शुड वी डू दैट और नॉट. अभी वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन इट इज फॉलोइंग बिकॉज दे आर बोथ लाइक 50-50. कुछ बोल रहे हैं करना चाहिए, कुछ अदर यूनिवर्सिटीज बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, सो दैट दे कैन सिट डाउन एंड स्टडी एंड डू देयर dissertation or concentrate on their studies rather than, you know, focusing on the job. तो वो discussion चल रहा है. So just keep your eyes and ears open on the UK government के site पे. मैं तो of course video बनाऊंगी when it is updated. तो maybe हो सकता है कुछ rules change हो, but at the moment there is no official update. Sure. So those are the 5-6 kind of major announcements recently. All right. So let's wind it up now. मैंने आपको बहुत टाइम खा लिया है. No, that's fine. Friday I've been listening कि आदि अभी I will just see you say like are you not done? No. Like I said, Friday is my chill day, you know, so I'm not even counting this as my shooting day, you know, because it's just like fun, right? You know, it's not like a serious conversation. It's just like nice to meet you guys in person. I really want like, you know? I understand serious conversation, like, but there are many ways to, you know, give your message away. So I just want कि जो reality है, जो facts हैं, वो पहुंच जाएं. And not in form of lecture because nobody likes lecture. Backbenchers हैं, हमें पता है. Agree. Right, exactly. So do you want to like, you know, a 2-word sentence for every student? Let's say.
अपना जो भी फोकस है, यू नो, व्हाटएवर इज योर लॉन्ग टर्म गोल, आई डोंट नो, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से, कुछ लोग आते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेकर के लेंगे यूके से एंड दे विल गो बैक. सो व्हाटएवर इज योर लॉन्ग टर्म गोल, उस पर फोकस रखो. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद लॉट ऑफ थिंग्स. आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगी. इंजॉय योर लाइफ ऑफ कोर्स, क्योंकि इंजॉयमेंट इज ऑल्सो नीडेड. जस्ट कीप अ परफेक्ट बैलेंस, है ना. एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, जॉब भी करो, और जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, just make smart moves towards it, you know, whether through networking, meeting more people, or using LinkedIn properly, or any other method you think is right. You do surround yourself with smart people, strong people, and create your own network as well, so that you can get some kind of help you need or any kind of guidance. That's all, to be honest. Enjoy your life in UK till the time you are here. Exactly. So thank you for being Thank in you for today. having me. Problem. Thank you. And I'm very sure most of the students जो देखेंगे या फिर जो भी यूके में आने के लिए इंटरेस्टेड है, they will come to you. Knowledge buddy is always there. Thank you. If they come, of and course. I will make sure that as much I can do from as an Indiawale abroad host, we'll do our best to make sure कि सबकी pleasant हो यहाँ पे जितने भी time they are in UK. Yeah. And as people who follow me or like they are in touch with me, they know that you are one of our career counselor expert. Yeah. And you are there on website also. So really thank you. Thank you. I will disturb you again and again every Bilkul. time there is something. I Welcome. will be there You're like always okay, welcome. tick I'm there. पक्का बर्गर लेकर आना बस. Of course. All right. ठीक है. All the best to all the students, है ना. Just keep on watching our videos so that you are updated what's happening in the UK Sure. market, and just keep on taking help as needed. Of course. ठीक है. Thank you. Thank you.